Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is Physical and Chemical Changes of Matter. Today we are going to discuss about change in state of matter, like water, melting and freezing. So my dear students, आज हम मैटर की मुख्तलिफ जो स्टेट्स चेंज होती हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर की मेल्टिंग पॉइंट और उसके फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully and then answer. Quickly tell me that what did you observe from melting and solidifying of candle wax? हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने कैंडल को जो है वो बर्न किया था एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वी ऑब्जर्व्ड दैट द कैंडल वैक्स स्टार्टेड मेल्टिंग एंड द wick of the candle changed into smoke and ash. So we observed two types of changes in that experiment. One was about chemical change, which was permanent, and other was solidifying and melting of the candle wax. That was a temporary change. यानी कि अगर कैंडल की वैक्स मेल्ट होती है तो थोड़ी देर बाद विद टाइम इट अगेन सॉलिडिफाइज यानी कि जम जाती है. सो इसका मतलब है ये कोई परमानेंट चेंज नहीं था, ये टेम्पररी चेंज था. हीट की वजह से चीजें जो है वो मेल्ट होती हैं और उसके बाद अगर वो टेम्पररी चेंज होता है तो वो रिवर्स भी हो सकता है और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो दोबारा से जम जाती हैं या सॉलिड हो जाती हैं. So my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So here look at the ice creams. You can see some ice creams on your screen. तो क्या आपने इनमें से कोई आइसक्रीम कभी खाई है? चॉकलेट आइसक्रीम या आइस लॉली? Have you tasted any of them? So अपनी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में मुझे बताएं. Which one is your favorite ice cream? My favorite ice cream is the chocolate one. Okay. So bring out ice cream from your freezer at room temperature and start observing either it will start melting or not. If yes, then why? What type of change of melting ice cream is? Melting of ice cream जो है उसमें कौन सा चेंज होता है? So my dear students, यहाँ मैंने आपके लिए एक आइसक्रीम है जो मैंने फ्रीजर से निकाली है and it is in solid form. आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी जो है it has started melting. तो हम इसको कुछ मिनट्स के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये कितना मेल्ट होती है. ठीक है. और जब आइसक्रीम मेल्ट होती है तो ये किस टाइप का चेंज है? इज इट अ फिजिकल चेंज और इज इट अ केमिकल चेंज? दिस इज अ फिजिकल चेंज. क्यों? क्योंकि जब आप इसको वापस फ्रीजर में रखेंगे तो इट विल अगेन बी सॉलिड. तो जो ये मेल्ट हो रही है ये किस वजह से मेल्ट हो रही है? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है बाहर ज्यादा हो गया. फ्रीजर में टेम्परेचर कम होता है, फ्रीजर ठंडा होता है ज्यादा, तो इस वजह से ये वहां सॉलिड हो जाती है. और जब आप इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं क्योंकि बाहर गर्मी होती है, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. यू कैन सी ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट भी होनी शुरू हो गई है. इसको हम लेक्चर एंड तक देखेंगे कि ये कितनी ज्यादा जो है वो मेल्ट हुई है. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. डिस्क्राइब एंड डेमोन्स्ट्रेट द स्टेट्स ऑफ वाटर, दैट इज मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, evaporation and condensation. Today we are going to discuss about melting and freezing points. Okay, so now let's quickly move forward towards the pre-reading question. What is melting point? Quickly tell me. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. melting point हम किसको कहते हैं? When you increase the temperature of a liquid and it turns from solid into liquid, that is its melting point. And what is freezing point? The temperature at which a liquid turns into solid or freezes, that is the freezing point. Okay, now let's start the reading. I request you all to please open page number 68 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Change in states of matter. We are talking about water. We have learned that temperature affects the motion of particles. When this motion increases or decreases beyond a certain limit, matter changes into another state. So my dear students, जब भी पार्टिकल्स को हीट अप किया जाता है, यानी कि किसी आप चीज को हीट अप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट हीटिंग वाटर. सॉरी, आप आइस को जो है वो हीट अप करें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो सॉरी लिक्विड में चेंज हो जाता है. तो ये किस वजह से हुआ? ये हीट की वजह से हुआ.
जो वाटर के आइस के पार्टिकल्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं एंड दे चेंज इनटू वाटर। अगर उनको आप मजीद हीट करेंगे तो उनके पार्टिकल्स मजीद एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाएंगे और फिर क्या होगा, दे टर्न इनटू गैस, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो पार्टिकल्स की जो मोशन है और उसकी पोजिशनिंग की वजह से जो है मैटर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है वो चेंज करता है। So when this motion increases or decreases beyond a certain limit, matter changes into another state. Below are the processes that explain such changes. Melting and freezing. To understand the concept, we start with a thing with temperature is lower than room temperature, for example, ice. Bring out ice cubes from the freezer and place them on at room temperature. Soon it will melt and change into liquid state. When a solid is warmed, its particles begin to move fast. When the particles movement becomes so fast that they begin to flow over each other, solid melts. The temperature at which solid changes into liquid state is called its melting point. Ice begins to melt when its temperature increases above 0 degree centigrade. So my dear students, किसी भी चीज के पार्टिकल्स, किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स जो है या आइस के पार्टिकल्स जो हैं, अगर उनको हीट अप किया जाए तो वो क्या करते हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद जो है वो दिस बिगिन टू मूव फास्ट। और जब वो इतना फास्ट मूव करना शुरू हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर से गुजरने के काबिल हो जाते हैं, द सॉलिड आइस मेल्ट्स इनटू लिक्विड। और इसका ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है, दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। Similarly, if water is cooled below 0 degree centigrade, its particles release the energy. Their movement becomes slow and they become close to each other and start to freeze, solidifying. The temperature at which a solid freeze, it's called its freezing point. So, my dear students, जब water के particles जो है या water को जो है आप वो पिघला हुआ है, आप उसको freezer में रख देंगे because the temperature is very low there, 0 डिग्री से कम होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी रिलीज करनी शुरू कर देते हैं, जितनी भी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है वो उसको रिलीज करना शुरू कर देते हैं। उनकी मूवमेंट जो है वो जो तेजी से मूव कर रहे थे उनकी मूवमेंट स्लो होनी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जम जाते हैं। सो दे सॉलिडिफाई, दे फ्रीज देयर एट द एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड freezes into solid is called its freezing point, और water का freezing point क्या है, that is 0 degree. So here you can see the ice melts above 0 degree centigrade and water freezes below 0 degree centigrade. So ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और आप इसको लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। सो क्या चीज है, टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसको कम करने से या ज्यादा करने से वाटर जो है अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेता है। वाटर इज मैटर, तो इसका मतलब है टेम्परेचर की वजह से मैटर जो है अपनी हालतों को चेंज करता है। ये हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, यानी कि कैंडल को भी जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो इट स्टार्टेड मेल्टिंग, जब टेम्परेचर कम हुआ तो वो अपने आप जम जाती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है दे एब्जॉर्ब द एनर्जी और उसकी वजह से या रिलीज द एनर्जी, जिसकी वजह से दे सॉलिडिफाई, फ्रीज और दे मेल्ट। So here you can see the particles are frozen because of the temperature is very low, they are in solid, और जैसे ही they start to absorb energy above 0 degree centigrade, तो इसके जो particles हैं they start to move fast and the water and the solid ice turns into liquid water. Again you can see the ice cream, again you can see the ice cream, जिसकी वजह से जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो जाती है। हमने ये अभी जो है एक्सपेरिमेंट किया था, आप इसको फ्रीजर से बाहर निकालेंगे, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे इसके पार्टिकल्स एंड दे विल मूव फास्ट एंड दे विल टर्न इनटू लिक्विड आइसक्रीम। इसको आप वापस फ्रीजर में रख देंगे तो अगेन व्हाट विल हैपन, इसका जो टेम्परेचर है वो लो होगा, पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज करेंगे,
और उसके बाद they will solidify, they will freeze into again ice cream. So my dear students, now let's have a look at ice and ice cream. मैंने ice जो है वो freezer से निकाली थी and you can see it has started melting क्योंकि temperature जो है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है obviously, तो इसकी वजह से it has started turning into water. और अगेन आप यहाँ देख सकते हैं आइस जो है ये काफी मेल्ट हो गई है, देखिए स्टिक से भी उतर गई है, इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग. ठीक है, तो इस वजह से जो है जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है चीजें मेल्ट होना शुरू हो जाती है क्योंकि पार्टिकल्स क्या होता है बेसिकली उनके पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से दे लूज, वो लूज होते एक दूसरे से दूर होते ही दे टर्न इनटू आइस. आप इसको वापस फ्रीजर में रखेंगे तो दे विल रिलीज द एनर्जी, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, मूवमेंट स्लो हो जाएगी और ये सॉलिड होके फ्रीज हो जाएंगे. Okay. So here you can see how the water melts and how it again freezes when the temperature is lower down. Okay, now is the time for evaluation. Quickly tell me what is melting point of solids? Solids का melting point क्या है? The melting point of solids is when the temperature is above 0 degree centigrade. आप ice की बात कर रहे हैं. So when the temperature is above 0 degree centigrade and the particles start to move fast, they gain the energy, they move fast and they slide past each other and turn into liquid water. So why does ice melts at room temperature? Because the temperature is above 0 degree centigrade, so that is why it melts, they gain energy. So what is freezing point of water? That is 0 degree, below 0 degree. How does water change into ice? When the temperature is below 0 degree centigrade, the particles of water, they release the energy and start to move slow and come together and then they freeze and solidify into ice. Now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So, name, write down your name and roll number. What is melting point? Melting point किसको कहा जाता है? Write it down. What is freezing point? Why ice cream melts at room temperature? Match the following accordingly. So when you will heat the chocolate, it will turn into liquid chocolate. When you will heat the butter, it will turn into liquid butter. And water will turn into liquid ice. When you will cool something, you will cool chocolate, it will turn into solid chocolate. The butter will turn into, liquid butter will turn into solid butter. So this is how it is. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the next part of the worksheet. Read the given questions carefully and write A or B below them. It will melt. What will happen when we heat chocolate bar? So it is A. What will happen when we heat ice cream? It will melt. So that means A option आएगी. What will happen when we cool liquid chocolate? B. What will happen when we heat butter? A. So this is how you will complete the worksheet. Now is the time to note down the homework. For homework, you will do question number 4 and 9. Melting and freezing point, section B, page number 74 and 75. You will also do question number 2, freezing and melting point, section D, page number 75. So my dear students, now is the time for wrap up. For wrap up, today we have learned that the temperature at which solid ice changes into liquid water is called melting point. Ice melts at room temperature because temperature of ice is lower than the room temperature. The temperature at which the liquid water changes into solid ice is called its freezing point. So my dear students, I hope now you all know about freezing point and melting point and how matter changes its state when they are heated or when they are cooled down. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.